Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. Very good. So today's topic is determiners. We are going to cover this topic, determiners. Let's begin. Miss Rosie is making a display to help her class understand some words. However, she has dropped all the cards on the floor. Oops. Please help her by placing the correct word in the correct column on the display. So यहाँ पर जो मिस रोजी हैं वो क्या है, क्लास को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ वर्ड्स को, लेकिन अचानक से क्या होता है, जो कार्ड्स हैं वो जमीन पर गिर जाते हैं, फर्श के ऊपर गिर जाते हैं. अब उनकी हेल्प करनी है उनको करेक्ट तरीके से प्लेस करने में. तो वर्ड्स क्या क्या है, वो वर्ड्स पढ़ते हैं हम पहले, फिर आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्लेस करेंगे. व्हाट, अ, योर, एनी, दीज, हुज, हिज, विच, दोज, दिस, फ्यू, द, अर, फर्स्ट, देयर एंड दैट, सम. सो यहां पर देख लेते हैं हेडिंग क्या है बच्चे. डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल, पॉजेसिव डिटर्मिनर्स, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स एंड न्यूमरल्स. तो इसका मतलब आपने क्या करना है, अरेंज करवाना है, इन वर्ड्स को ढूंढना है कि पॉजिटिव कौन से, इंटेरोगेटिव कौन से हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से और नंबर्स में कौन से हैं. Words like this, that, are, and, the, much, what, etc. are the clarifying words which give more information about the noun. Noun के बारे में पूरा प्रॉपर तरीके से जो information देते हैं, clarify करते हैं ये words. A determiner is used to modify a noun. It indicates reference to something specific or something of a particular type. So determiners क्या है, मॉडिफाई करते हैं बच्चे नाउन को, ओके, स्पेसिफिक मीनिंग के साथ, समथिंग कुछ बताते हैं, पर्टिकुलर बताते हैं. देन डिटर्मिनर्स टाइप्स. डिटर्मिनर्स टाइप्स का मतलब कितनी तरह के डिटर्मिनर्स हम पढ़ने जा रहे हैं. फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. फर्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स. दिस, दैट, दीज, दोज, एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस इज हिज एंड दैट वन इज योर्स. These boys are mischievous and those girls are innocent. Where have those thieves gone? We like this film very much. Interrogative determiners. What, which, whose, etc. For example, what time do you go to office? What kind of man is he? Which shirt is mine? Whose head was injured? पॉजेसिव डिटर्मिनर्स. एग्जाम्पल के साथ बच्चे आपको प्रॉपर समझाए हुए हैं तो ध्यान से पढ़ते रहेंगे इनको. पॉजेसिव डिटर्मिनर्स, माई, आर, योर, हर, हिज, इट्स, देयर, एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गिव यू माई कार इफ यू अलाउ माई ट्रक टू गो. योर फ्रेंड्स एंड हिज क्लासमेट्स आर कॉमन. आर कॉलोनी स्टैंड्स ऑन द यमुना नियर देयर होटल. हु इज इट्स मास्टर. तो यहाँ पर पॉजेसिव की बात की गई है तो पॉजेसिव में इन वर्ड्स का ही यूज किया जाएगा जो पॉजेसिव डिटर्मिनर्स के आगे राइट डाउन है बच्चे. नो द रोब्स के अंदर पॉजेसिव डिटर्मिनर्स आर ऑल्सो मेड बाय द यूज ऑफ एपोस्ट्रोफे. फॉर एग्जाम्पल, एपोस्ट्रोफे लगाना होता है तो देखते हैं कैसे. दीज आर कान्हा's टॉय. ये किसका टॉय है, कान्हा's टॉय, तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना आपने. Then girls' dresses are varied in pattern. Let us enjoy mother's antecedents today. He has gone to his friend's wedding. Miss friend की wedding में वो गई. Numerals. अब numerals बेस पर देखते हैं कौन कौन से वर्ड होते हैं बच्चे. Some, several, any, few, first, second, etc. For example, they have invited me to a second interview. I was the first soldier to reach the peak. Some trees are quite tall here. I have seen several hill stations. Quantifiers के बेस पर देखेंगे बच्चे. Quantifier क्वांटिटी को दिखाते हैं, much, little, some, etc. For example, there are much noise in the classroom. Do you still want this little food? Not much rice was left for the guest. Open the window. Let some air come in. So यहाँ पर क्या दिखाया गया है बच्चे, क्वांटिफायर क्वांटिटी को दिखाया गया है. आर्टिकल्स. आर्टिकल्स अ एंड द को. लेट्स स्टडी अबाउट आर्टिकल्स इन डिटेल. सो आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे. आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज इनडेफिनिट आर्टिकल, जिसके अंदर कैटेगराइज होते हैं बच्चे अ एंड एन को, इनको रखते हैं. डेफिनेट आर्टिकल हमारा होता है द.
So, use of indefinite articles. Indefinite articles are used for nouns but according to the word immediately following them. Use of article A को कहाँ पर use करते हैं बच्चे? Article A is used with a noun beginning with a consonant sound. For example, a book, a lion, a building, a university, a unit, a one room flat. तो इसका मतलब कहाँ पर जो बिगनिंग करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ वहाँ पर लगता है अ का यूज. नोट द एग्जाम्पल. A university in it, a has been used because it is spoken with a consonant sound u despite the spelling beginning with u. u की स्पेलिंग को नहीं देखना, इसके कॉन्सोनेंट साउंड को आपने पहचानना है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगता है अ. आर्टिकल ऑफ एन को कैसे यूज करते हैं? आर्टिकल एन इज यूज्ड विद अ नाउन बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड. फॉर एग्जांपल, एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन एग, एन इंडियन, an honest man. Note the example, an honest man. The word honest has a vowel o sound though its spelling begins with the consonant h. ठीक है, honest कैसे शुरू होता है? h से, लेकिन उसकी साउंड जब बोलते हैं तो honest बोला जाता है. That's why हम ये वाला आर्टिकल n इसके साथ यूज करते हैं. Know the ropes के अंदर indefinite articles are used for the nouns but according to the word immediately following them. A worker, a book, an intelligent worker, an interesting book, an orange, an idea, a round orange, an idea, an innovative idea. तो आप यहाँ पर वर्कर कैसे? इंटेलिजेंट वर्कर, बुक इंटरेस्टिंग है, ऑरेंज कैसे? राउंड ऑरेंज है, आइडिया इनोवेटिव आइडिया. तो इस तरह से आप देखेंगे अ और एन का प्रॉपर यूज. यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कहाँ पर होता है? द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक और पर्टिकुलर. यू कैन यूज आर्टिकल द इन द फॉलोइंग केसेस. यूज आर्टिकल द टू शो अ डेफिनेट पर्सन और थिंग दैट हैज बीन मेंशन्ड बिफोर. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय एंड अ गर्ल वेंट टू अ रेस्टोरेंट टुगेदर. The boy offered the girl several tasty dishes of the restaurant. रेस्टोरेंट पहले भी यूज हुआ है, लेकिन द का यूज क्यों हुआ? क्योंकि अगेन हम इसको यूज कर रहे हैं. द स्कूल ही स्टडीज इज इन लोकेटेड इन कर्टियार्ड. स्कूल के आगे द लगेगा. आर्टिकल द इज यूज टू शो अ डेफिनेट पर्सन और थिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं बच्चे. फॉर एग्जाम्पल, द फॉर्मर मिनिस्टर इज श्योर टू लैंड इन जेल. The Prime Minister is likely to meet the American President. Article the is used before a singular noun to show its whole class. For example, the dog is a faithful animal, the dolphin like company. इस तरह से. Article the is used before an adjective. It shows a class. For example, the honest should stand is protest against the corruption. तो यहाँ पर means all honest people की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर the का. The gentle are sure to win others' heart means all gentle people. Article the is used before the geographical proper nouns के साथ भी इनका यूज किया जाता है. geographical जैसे the Ganga, the Brahmaputra, the Sharda, the Bees, the Himalayas, the Nilgiris, the Andes, the Andaman, the Japanese island and group of islands, not single ones. The Indian Ocean, the Pacific Ocean, the Arabian Sea, the Bay of Bengal, the Republic of India, the United States, the United Kingdom, unions of states. Article the is used before the names of books, newspaper, journals, radio and television channels, etc. For example, the Teeny Tales was in great demand. The G Cinema broadcast only films. The Times of India is a popular newspaper. The Aaj Tak is a popular news channel. Know the ropes. In practice, article the is not only used for radio and television channels, sometimes even for newspapers and journals also. Omission of articles. कहाँ पर articles का omissions पढ़ने वाले हैं हम. Articles should be used carefully. People are wont to use them where they are not needed. Let's know where they are not to be used. First, कहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट है बिफोर मोस्ट ऑफ द प्रॉपर नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल, कुणाल, सलमा, जोगिंदर, जलंधर, हैदराबाद, माउंट एवरेस्ट, अंडमान, इंडिया, चाइना, etc. Before men,
When used in general sense में अगर man का use कर रहे हैं तो नहीं करना. God made the world and man made the town. Man is a social being. Before names of days and months, for example Sunday, Monday, January, February, नहीं करना इनके आगे use. Before names of languages के आगे, for example Hindi, Punjabi, Kashmiri, Italian, like. Before abstract and material nouns, for example punctuality is a great virtue. There is the shortage of grain in the country. Iron is a useful metal. This curtain is made from silk. However, when abstract and material nouns refer to some specific place or person, article the is used with them. For example, the silk of this curtain is precious. The iron used in the machine is rusted. Before the name of thing or place when used for its primary purpose, such as bed for sleeping, temple for worshipping, hospital for treatment, prison for lodging criminals, etc. When these things or places are not used for their primary purposes, articles the will be used. For example, you all must go to bed. To sleep के लिए बात हो रही है यहाँ पर. Go to the bed and search it properly, not to sleep. The patient went to hospital means to be treated के लिए भेजा जा रहा है उसको. The masons were working in the prison, not to be imprisoned के लिए. Articles is not used in several proverbial phrases के साथ यूज नहीं करते बच्चे, like at home, by bus, by train, in demand, on demand, strike out, in hand, by hand, catch fire, by air, on foot, take breath, at sunrise, by land, give ear, in town, send words, lose heard, at sunset, by night, in debt, leaves home, set sail, take offense. Example, take rest by day and work by night. The minister will be in town tomorrow. I have no stock in hand but I can procure it on demand. They came by bus but went by air. Article is not used with the names of games. I love football but he loves cricket. Some old people were playing chess near the turning. Know the ropes? Look at the example. He is a hockey player. In this sentence, article a has been used for player and not for hockey. Here, hockey functions like an adjective and not a noun की तरह वो use हो रहा है. ठीक है, adjective की तरह hockey को use किया गया है. Look at the example. I bought a football for 50 rupees. Here are the speakers refers to the ball by which football is played and not the game of football. So article has been used with it. So pick your brain. यहाँ पर exercise है बच्चे, ये खुद से करनी है समझते हुए आपने. यहाँ पर भी है बच्चे sentences के अंदर following letters और पूरा complete phrases को use करते हुए exercise को खुद से complete करना है. Do it yourself बच्चों.